Hello future officers, welcome to D's Coded again. In today's video, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन असाइनमेंट नंबर 2 के, जो कि असाइनमेंट था बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स इन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल. आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी. ये इनिशिएटिव जो है वो आपको यूपीएससी सीसैट जो 2025 का पेपर होगा उसको बहुत इजीली क्लियर करने के लिए स्टार्ट किया गया है. और इस इनिशिएटिव के थ्रू आप पूरा सीसैट 1 मंथ में कंप्लीट कर पाएंगे विद कंसेप्ट्स, सॉल्यूशंस, पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टेस्ट आल्सो. ओके, सो द क्वेश्चंस टू दिस असाइनमेंट नंबर 2 आर provided in the Telegram channel, the link of which is provided in the bio of this channel. Okay, so with this हम शुरू करते हैं इन questions का solution. The first question is like, let there exist a number x such that x is an even number, then which of the following statement is correct? Okay, so स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका. ये कह रहा है x एक इवन नंबर है, तो मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू आपका होगा 2, 4, 6, 8, 10 और आगे तक आपका चलता जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट इज 3x विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 6. गेट इट? सो लेट्स स्टार्ट दैट 3x. इफ आई पुट x इज इक्वल टू 2, then I get 6. 6 is divisible by 6. This one is taken. Now if x is equal to 4, then 3 into 4 is 12, which is also divisible by 6. If x is equal to 6, then 6 into 3 is 18, which is also divided by 6. If x is equal to 10, 3 into 10 is 30, which is also divided by 6. So this pattern is kept on repeating. So I can say that 3x will always be divided by 6. So this statement is correct. Now I've got my answer, that is statement number A. Okay, I need not check further because I have already got my answer, but you can try and check for B and C and D. Okay, let's take B now. If it is given that x square plus 3 by 4 is divisible by 7. Okay, so if I take x is equal to 4, which is also an even number, it becomes 16 plus 3 by 4. It is equal to 19 divided by 4, which is not divisible by 7. So this statement is wrong. Now next is my C, which says that 6 into x plus 10 is divided by 11. Now if I take x is equal to 4, this is 6 into 4 is 24 plus 10, which is equal to 34, and 34 is not divisible by 11. Okay, if it would have been 33, it would have been divisible. So our answer is A. Now let's move on to question number 2. Okay, now we'll move on to question number 2. It says that there are two numbers P and Q, both of which are odd. Then which of the following is correct? Okay, addition of P and Q gives an odd number. Now we know that both P and Q are odd. So P is odd and Q is odd. So we know one thing, that from the videos we have done or the lectures we have done about odd and even numbers, the video which is provided in the playlist or in this channel, if we'll go into the playlist of number system, you'll find a video of odd and even number. From there you can revise the concept again if you're not clear. Okay, so odd plus odd, what it gives to me is an even number. So this statement 1 is wrong. I already got to know that now P plus Q would be an even number. Now it says that if 1 is added to sum of P plus Q, we get an odd number. Now I already have P plus Q as even. I add 1, and 1 is a odd number. Now I know one thing, that even plus odd gives me a odd number. Okay, so this statement of mine is correct. Now let's move on to another one.
Now I got my answer, but let's check for other statements also. It says that now I already know that p plus q is even. I subtract 1 from it. Even minus odd. Even minus odd. Even minus odd would give me an even number, and it says odd. So this statement is also wrong. Now I'll go on to statement number 4. It says the product of p and q. It says product of two odd numbers, that is odd into odd, okay, plus an odd number. So this becomes odd. So odd plus odd is even. This we have already seen above here. So this statement is also wrong. So my answer is B. Okay. Now let's move on to question number 3. Now we'll talk about question number 3. It says that how many 4-digit even natural number exist of the form AABB such that A is greater than 0. So we know one thing, that any even number is completely divisible by 2, or it comes in a table of 2. So 4-digit numbers start from 1000. Okay, but we need to see the numbers which are of the form AABB. So in the 1000 lines, the number would be like 11 in the starting. BB, 11 BB. In 2000 line, it would be like 22 BB. And in 3000, 33 BB. And it would go on to this 99 BB. Okay. Now, understand one thing, that for any number to be divisible by 2, either this is to be 0 0, or this is to be 2 or 2, this is to be 4 4, 6 6 and 8 8. So for any 4-digit number of the form AABB to be divisible by 4 or divided by 2, or to be an even number, we need to consider one thing, that the unit digit and the 10th digit should have 0 0, 2 2, 4 4, 6 6 and 8 8. So we'll start with 1 1. Okay, so we can say 1 1 0 0, 1 1 2 2, 1 1 4 4, 1 1 6 6 and 1 1 8 8. So I can say that in 1000 lines, 1000 in the, if the, in terms of 1000s, there are 5 numbers which are like this. Similarly, it would be like 2200, 2222, 2244, 2266 and 2288. It would be like 3300, 3322, 3344 and 3366 and 3388. And we can easily see that it would go on to this 9900 and 9922 and so on. So I can see here 4 5 6 7 and 8. So I can see one thing over here, that this is getting repeated. So in this row we can count number of entries, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So I have 9 entries over here, and in this one I can count 1 2 3 4 5. So these are 5 entries. So if we'll multiply these entries, I'll get the amount of numbers. So that would be 5 into 9, that would be 45. So my answer to this question is 45, and the option is A. Okay, now let's move on to another question, which is question number 4. This question would help you clear all the properties of even and odd number, and these type of question only are asked in UPSC. Okay, they'll complicate it for you, but if you know how to apply the property, the question is very easy. It is saying that there are 3 distinct odd numbers P, Q and R, which of the following is correct. 3 हमें odd natural number दिए हैं P, Q and R, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो हम पहले A से शुरू करते हैं. सॉरी, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं होगा, है करेक्ट होगा नहीं, कौन सा करेक्ट नहीं होगा. तो फर्स्ट की बात करते हैं.
we'll talk about the first. It says that P into Q into R square. So this is odd, this is odd, and this is odd. So we have three odds. We can say odd into odd into odd. So odd into odd into odd would give me an odd number only. So this statement is correct. But here we have to find the statement which is not correct. So this option would not be taken. Let's talk about B. It says that P minus Q whole square into R. Okay. So this is odd, this is odd. So odd minus odd, what it gives me? Odd minus odd, what it gives me? Odd minus odd is even. Okay, and this itself is odd. So what I have is even into odd. Okay, so this would be an even number, because even into odd is an even number. We already know this property. Okay, this would be even square, but even square is also even. So this statement is correct although, but we are not taking it because we have to find the wrong statement. Now we'll move on to C. C says P plus Q minus R whole square into P plus Q. Okay, now we know one thing, P plus Q, यानी कि odd plus odd, odd plus odd, odd plus odd would give me an even number minus an odd number. So odd number in plus an odd number would give me an even number minus an odd number, because R is odd. So this even minus odd, even number minus an odd number would give me a even minus odd would give me a odd number. So this becomes odd square. And here odd plus odd would give me an even number. So odd into even would give me again an even number. This statement is correct, but we do have to find the wrong statement. So this is wrong. So our answer would be D, but we'll check for it also again. So let's talk about D. So D says that P minus Q into Q plus R into P minus Q minus R. So this is odd. This is your odd minus odd. So odd minus odd would be even. So this is even into odd plus odd. This would also be an even number. And this P minus Q would be even. And this is odd. So even minus odd is also odd. Even minus odd is also odd. So this is even square into odd square. So even into odd would give me again an even number, but the option says it is an odd number. So this statement is wrong, but my answer would be this, because we have to find the wrong statement. Okay, now let's move on to question number 5. It says that there are two natural numbers P and Q such that P is prime and Q is composite. Then which of the following is correct? Prime numbers are those which have two factors, that is, if P is prime then it would have two factors, that is P and 1. And if Q is a composite number then it has more than two factors. Q into 1 तो होगा ही, पर कोई x भी होगा, कोई y भी होगा, और जो भी होंगे. We do not know the value of P and Q, so we cannot say. But any number which has more than two factors is composite. But for any number which has only two factors, it's prime. Okay, now let's check for this. P into Q cannot be an even natural number. First option is P into Q cannot be an even natural number. Let's check for A. Let P be P is equal to 2 and let Q is equal to 6. Now P is a prime number, Q is composite, and 6 into 2 is equal to 12, which is a even number.
because it's divisible by 2. So this statement is wrong. Now let's check another statement, number B, that P plus Q by P cannot be an even natural number. So what I do is I take P as 3, which is a prime number, and Q as 9, which is a composite number. Why? Because it has more than 2 factors, and 3 is prime because it has only 2 factors, that is 1 and 3. So it is 12 divided by 3, that is 4, which is also an even number because it is divisible by 2. So this statement is also wrong. Now I'll check for statement number 3, C. Q minus P cannot be an even natural number. Now Q is composite, so I take 6. Why 6 is composite? Because it has more than 2 factors. Its factors are 2, 3, 6, 6 into 1. Okay. So and I take 2, and 2 is prime because it has only 2 factors, 2 and 1. So my answer is again 4, and 4 is an even number because it is divided by 2. So this statement is also wrong. So my answer will be D. So none of the statement is correct. Now I move on to the question number 6. Okay. There is a number x, so which is the first value of x for which x square plus x plus 41 is not a prime number. हमें ये पता लगाना है कि x की ऐसी सबसे कौन सी पहली वैल्यू है कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 14 इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें पुट करके ही देखना पड़ेगा इसमें. तो लेट्स से इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 41. ओके, x स्क्वायर प्लस x प्लस 41. So now let's check if for x is equal to 40, what answer is coming. 40 square plus 40 plus 41. So here I have is 1600 plus 81. So I'll get 1681, and 1681 is not a prime number. It is not a prime number. Let's check for x is equal to 1. Okay, it becomes 1 plus 1 plus 41. It would be 2 is equal to 43. 43 is a prime number. So x is equal to 1 cannot be taken. Now let's check for x is equal to 13. Okay, it becomes x square plus x plus 41 is equal to 13 square plus 13 plus 41. It is equal to 169 plus 4 and 5. It becomes 3, 2 and 2. 223 is a prime number. Okay, 223 is a prime number. So this option is also eliminated. Now let's check for x is equal to 6. So it becomes 6 into 6, 36 plus 6 plus 41. So it becomes your 42 plus 41. So it is 3 and 8, 83. 83 is also prime number. So this option is also eliminated. So my answer is A only. Okay. So the first value of x is 40. Now let's move on to another question, that is question number 7. This says that a person has a collection of cards where first 1000 natural numbers are written. Using these cards, he wants to create a pack of cards that contain the maximum card possible, but this should satisfy the following condition. ये कहता है एक आदमी है, उसके पास कार्ड्स हैं जिसमें 1 से लेके 1000 तक नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, और उसको एक पैक बनाना है जिसमें मैक्सिमम कार्ड होनी चाहिए, पर उसमें ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. नो नंबर ऑन द कार्ड शुड बी अ प्राइम नंबर. कोई भी कार्ड में जो नंबर है वो प्राइम नहीं होना चाहिए. ठीक है. दूसरी कंडीशन है व्हेन 2 कार्ड आर सिलेक्टेड एट अ टाइम. अगर एक बारी में 2 कार्ड सेलेक्ट करते हैं, वी शुड गेट अ सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स ऑन द कार्ड. अगर हम 2 पत्ते उठाते हैं उन पैक में से, तो क्या होना चाहिए कि आपके पास को प्राइम आना चाहिए. को प्राइम का मतलब है जिन 2 नंबर्स के बीच में सिर्फ 1 जो है वो कॉमन फैक्टर. जैसे कि मैं एक ले लूँ नंबर 1 और 4. सो इसके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1. ठीक है. तो 1 एंड 4 आर को प्राइम बिकॉज 1 का फैक्टर है 1, 4 के फैक्टर है 4 एंड 1. सो इनमें कॉमन फैक्टर और 2 इंटू 2 इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है.
सो ये को प्राइम है। जिन नंबर्स के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होंगे वो को प्राइम होंगे। तो जो 1 है ना अपने आप में वो हर किसी नंबर के साथ को प्राइम है। तो पहला तो हमारा नंबर 1 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्राइम नहीं है, ना वो कंपोजिट है, पर वो को प्राइम है। तो पहला तो 1 ही आ जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है, देयर इज वन प्रॉपर्टी दैट स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स if we take consecutive prime numbers then their square would always lead co-prime numbers। जैसे कि अगर आप consecutive prime numbers की बात करें तो आपके prime number शुरू होंगे 2 से, ठीक है, आपके प्राइम नंबर 2 से शुरू होगा, फिर आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, फिर आपका 5, फिर आपका है 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 हो जाएगा आपका प्राइम नंबर, फिर 19 हो जाएगा, फिर 23 और फिर आपका होगा 29, फिर 31। सो देयर इज वन प्रॉपर्टी की ये, जैसे कि कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर का मतलब कि जो अगला प्राइम नंबर आएगा एक के बाद, जैसे कि 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 है, फिर 3 के बाद 5 है, तो एक कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर है। तो अगर हम इन प्राइम नंबर का स्क्वायर करते हैं, जो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर होते हैं उनका हम स्क्वायर करते हैं, तो हमेशा हमें को प्राइम नंबर्स मिलेंगे। तो हम स्क्वायर करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर, आपका 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ठीक है, आपका 3 का स्क्वायर आएगा 9, आपका 5 का स्क्वायर 25, आपका 7 का स्क्वायर 49, आपका 11 का स्क्वायर 121, योर 13 स्क्वायर इज 169, योर 17 स्क्वायर इज 289, योर 19 स्क्वायर इज 361, योर 23 स्क्वायर इज 529, योर 29 स्क्वायर इज 841 and your 31 square is 961। सो हम 961 तक ही लेंगे क्योंकि हमारे पास 1000 तक ही ये नेचुरल नंबर है, और इसके बाद जो नंबर हमारे पास आएगा जो को प्राइम होगा इसमें, वो आपका 1000 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 तो जो हमने देखा कि वो हर किसी से को प्राइम है, तो 1 भी आ जाएगा। तो हम नंबर काउंट करते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 नंबर हो गए। अब कंडीशन सेटिस्फाई करके देखते हैं कि नो नंबर एनी कार्ड शुड बी अ प्राइम नंबर। अब इसमें से आप देख सकते हो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, इन सबके एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है, और 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो 4 के फैक्टर हैं 2,2, 4,1, तो ये भी नहीं प्राइम हुआ, ये कंपोजिट हो गया। 3 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 25 के भी 2 से ज़्यादा, 49 के भी, ऐसे इन सभी के हैं। बट आप ये देखेंगे कि जैसे कि अगर आपने 2 कार्ड उठाए 4 और 1 के, तो इसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर जैसे कि 1 है। 4 और 9 उठाएंगे तो इसमें एक ही कॉमन फैक्टर मिलेगा आपको 1। 9 और 25 उठाओगे उसमें कॉमन फैक्टर एक ही मिलेगा 1। तो आप इसमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को चेक कर लो, उसमें आपको कॉमन फैक्टर एक ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये सारे नंबर आपस में को प्राइम है। तो हम इन नंबर्स को काउंट कर लेते हैं, वही हमारा आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर विल बी 12। ओके, so now let's move on to next question. The next question is like, if we are given a prime number p, then consider the following statement. For any value of p, ये आपका कैन नॉट है यहाँ पर, ठीक है। For any value of p, p square plus 7 is always a prime number। ये कह रहा है कि p की किसी भी वैल्यू के लिए p square plus 7 हमेशा प्राइम होगा। देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए। अगर मैं इसमें आपका ये कह रहा है कि p एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2 3 5 7 और आगे चलता जाएगा। अगर मैं p की वैल्यू इसमें 3 लेता हूँ तो मेरे पास p स्क्वायर आ जाएगा। p स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा मेरा 9, उसमें मैंने p स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा आपका, इधर देखें दोबारा से, जैसे कि p मैंने 9 ले लिया तो मेरा p स्क्वायर हो गया आपका, p इज इक्वल टू 3 दिया, वो कि एक प्राइम नंबर है, तो p स्क्वायर मेरा हो गया 9। तो p स्क्वायर 9 हो गया, उसमें 7 ऐड करूंगा, मेरा 16 आ रहा है। तो 16 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज के फैक्टर्स हैं 4 इंटू 4, 8 इंटू 2 एंड 16 इंटू 1। तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट. This option gets eliminated. Now we'll check for statement number 2. Let's say I take p is equal to 2. So p square would be 4.
okay, and p square plus 7 would be 11. So this is a prime number because it has only two factors, 1 and 11. And for 3 we have checked, it is not a prime. For let's check for p is equal to 5. It is 25 plus your 7. So this would be your 32, which is not a prime number, so it cannot be taken. If p is equal to, let's say, 7, so it is p square is 7 into 7, 49 plus 7, so it becomes your 56, which is also not a prime number. So we can say that only for p is equal to 2, p square plus 7 is a prime number. So this statement is correct. Now let's check for third statement. For any value of p square plus 7 cannot be a prime number, but p is equal to 2 के लिए p square plus 7 आपका 11 आया, जो कि एक प्राइम है. So this statement is also wrong. So I can say that only one statement is correct. This is also wrong. So my answer would be A. Now let's move on to the questions on passages. Two passages are given. Okay, the passages have been taken from the Hindu newspaper and the questions are formed from that. Okay, so हम इन दो passages को देखेंगे हम. The first passage is like, there is a wide variability in the way humans respond to immune challenges such as bacterial or viral infection. ये कह रहा है कि जिस तरीके से ह्यूमन रिस्पॉन्ड करता है, ह्यूमन की इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है, उसमें बहुत वेरिएशन है. बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जब ह्यूमन को होता है तो जिस तरीके से उसकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड करती है उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं. एज सीन विद द डाइवर्स रेंज ऑफ क्लिनिकल आउटकम ऑब्जर्व्ड आफ्टर इन्फेक्शन विद SARS-CoV-2. ये देखा गया जब बहुत सारे क्लिनिकल आउटकम हमने स्टडी करे जब SARS-CoV-2 का इन्फेक्शन हुआ. एज, सेक्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स प्ले अ मेजर रोल इन दिस वेरिएबिलिटी. ये जो वेरिएबिलिटी आ रही है इसमें एज, सेक्स और जेनेटिक फैक्टर्स एक मेजर रोल प्ले करता है. जैसे कि किसी की एज ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा उसका इम्यून रिस्पॉन्स अलग हो सकता है, किसी की सेक्स दूसरा है तो उसका इम्यून रिस्पॉन्स अलग हो सकता है. अगर किसी के जेनेटिक फैक्टर में कोई दिक्कत है तो कोई वायरल इन्फेक्शन उसमें कोई जेनेटिक डिजीज़ ट्रिगर कर सकता है. इसका मतलब ये है. बट मॉडिफाइबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लाइफस्टाइल में ऑल्सो कंट्रीब्यूट. फिर ये कह रहा है कि जो ये इम्यून रिस्पॉन्स में वेरिएबिलिटी है, तो अगर कोई लाइफस्टाइल चेंज है तो ये उससे भी इफेक्ट हो सकता है. फर्दर ये कहता है, अंडरस्टैंडिंग हाउ सच वेरिएबल्स अफेक्ट ह्यूमन रिस्पॉन्सेज कुड इम्प्रूव द डिज़ाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन. ये कह रहा है कि अगर हम इन वेरिएबल्स को समझते हैं अच्छे से कि कैसे ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम कैसे वेरिएबिलिटी दिखाता है, तो हम बहुत अच्छी डिज़ाइन कर सकते हैं वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट. ओके, so on the basis of this we will read this question and try to answer. Which of the following statement best reflect what is implied by the passage? इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो बेस्ट हमें बताती है कि पैसेज क्या कहना चाहता है. बेस्ड ऑन वंस जेनेटिक मेकअप स्पेशलाइज्ड वैक्सीन शुड बी मेड फॉर एवरी इंडिविजुअल. ये जरूर ये कह रहा है कि जेनेटिक मेकअप के हिसाब से वेरिएबिलिटी आती है इम्यून रिस्पॉन्स में, पर ये कहीं भी ऐसा नहीं कह रहा है कि हमें जेनेटिक मेकअप के हिसाब से हर किसी के लिए वैक्सीन बनानी चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज अबव दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सेकेंड इज लाइफस्टाइल चेंजेस कैन हेल्प इम्प्रूव इम्यूनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. तो यहाँ पे इसने कहा ही था कि जो लाइफस्टाइल चेंज है उसकी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो चेंज होता है. तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा. तो अभी चेक करते हैं, हम इसको पूरा करेक्ट नहीं मानेंगे, दूसरा देखते हैं. mRNA वैक्सीन आर डेवलप्ड कंसीडरिंग सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. ऐसा भी ये कहीं नहीं कह रहा है, ठीक है. ये mRNA वैक्सीन डेवलप हो सकती है ऐसे, पर ये ऊपर का पैसेज ऐसा कहीं नहीं कह रहा है. वैक्सीन डेवलपमेंट शुड बेसिकली कंसीडर वेरिएबल फैक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीवर रेदर देन वेरिएबिलिटी इन पैथोजन. जो वैक्सीन डेवलपमेंट है उसके अंदर जो वेरिएबल फैक्टर हैं, ठीक है, वो सिर्फ ह्यूमन के तर्ज पे देखे जाने चाहिए, पर पैथोजन के नहीं. कि मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमंस ही देखो, पैथोजन की वेरिएबिलिटी मत देखो. तो ये गलत है, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए अलग वैक्सीन बनेगी, किसी वायरस के लिए अलग बनेगी, उसी टाइप के दूसरे वायरस के लिए अलग बनेगी, क्योंकि सेम वैक्सीन हर एक पे नहीं काम कर सकती. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत होगी. तो आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 जो कि बी है वो करेक्ट हो जाएगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर पैसेज विच इज पैसेज नंबर 2. सेज दैट आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर ए स्पेशल कॉफी ग्रोन इन द हिली रीजन्स ऑफ अराकू वैली. आंध्र प्रदेश फेमस है अपनी स्पेशल कॉफ़ी के लिए जो अराकू वैली में उगती है.
विच दे क्लेम इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये जो वो क्लेम करते हैं बेस्ट इन नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड, जो वो क्लेम करते हैं कि ये कॉफ़ी सिर्फ इंडिया में बेस्ट नहीं है, बाहर भी बेस्ट है। इट इज़ प्योर अराबिका, ये प्योर अराबिका कॉफ़ी है। वेरी गुड अराबिका इज ऑल्सो ग्रोन अराउंड द शिवरॉय हिल्स ऑफ तमिलनाडु एंड मंजाराबाद फोर्ट ऑफ कर्नाटका। बहुत अच्छी क्वालिटी की अराबिका कॉफ़ी उगाई जाती है शिवरॉय हिल्स में भी और मंजराबाद फोर्ट में भी। मैनी यंगस्टर्स बिग सिटीज अक्रॉस इंडिया बाय एंड ड्रिंक स्टारबक्स कॉफ़ी एंड सीसीडी कॉफ़ी, कैफ़े कॉफ़ी डे कॉफ़ी। बहुत सारे यंगस्टर जो हैं इंडिया में स्टारबक्स और उसकी सीसीडी की कॉफ़ी पीते हैं। स्टारबक्स यूजेस प्योर अराबिका अलोन, स्टारबक्स जो है प्योरली अराबिका यूज़ करता है। वाइल इट इज़ नॉट क्लियर वेदर कैफ़े कॉफ़ी डे यूजेस प्योर अराबिका और नॉट, हमें ये नहीं पता कि कैफ़े कॉफ़ी डे प्योर अराबिका यूज़ करता है या नहीं। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। मोस्ट कॉफ़ी आउटलेट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड यूज कॉफ़ी ग्रोन एट अराकू वैली। ऐसा तो इस क्वेश्चन में नहीं लिखा, ये जरूर कह रहा है कि वहाँ के जो वो कंसीडर करते हैं कि भाई अराकू वैली की जो कॉफ़ी है वो बेस्ट है, इंडिया में नहीं बाहर भी। बट ये ऐसा नहीं कर रहा कि सारे की उसी को यूज़ करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मोस्ट कॉफ़ी आउटलेट्स यूज अराबिका टाइप ऑफ कॉफ़ी ओनली, ऐसा भी कहीं नहीं कह रहा कि मोस्ट अराबिका ही यूज़ करेंगे, कहीं नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि स्टारबक्स यूज़ करता है, बाकियों के बारे में इसने कुछ नहीं कहा। मोस्टली हिली रीजन्स आर फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ गुड क्वालिटी कॉफ़ी, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि हिली रीजन्स की ही बात हो रही है जहाँ पर कॉफ़ी अच्छी उग रही है। फिर है अराबिका इज़ द बेस्ट क्वालिटी कॉफ़ी, ऐसा कहीं नहीं लिखा इसमें कि अराबिका बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी है, बस ये कह रहा है कि गुड क्वालिटी ऑफ अराबिका उगती है शिवरॉय हिल्स में, तो ये भी आपका निगलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी। ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। गॉट इट? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। So with this we are done with this assignment solution. Okay, so what you have to do is you again revise the concept of even and odd numbers from the videos and then solve the illustration there, solve the PYQ and then try to attempt this test again. Okay, practicing again and again would increase your mind's capacity to process the question very fast in the time in the examination hall, because the more you practice, the more the concept would be in your mind and you will be able to solve any question. And I would like to tell you one thing, that in the UPSC every year on an average 3 questions are asked from even, odd and composite and prime numbers. So this gives you an edge of 7.5 marks and the questions are very easy. If you know the properties of even and odd number, prime and composite, then you can easily solve those questions. आप उन questions को बहुत आसानी से solve कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस इनिशिएटिव में बने रहिए, और अगर आपको लगता है कि इनिशिएटिव आपके लिए फ़ायदेमंद है तो और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में सजेस्ट कीजिए, ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएँ और हर एक का बेनिफिट कर पाएँ। बिकॉज मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, it is also useful for developing your overall personality, because if you keep on solving mathematics question again and again, then a cognitive ability, a thinking process, your mind would become more inclined toward thinking. It would have a rational mindset, because solving mathematics provide you rationality. It has been scientifically proven. That's why they have given you the CSAT paper, because an officer has a quality of rational thinking and they want to select officer. That's why they are giving you the CSAT paper. But this quality can be developed over time, and any quality development takes around 15 to 20 days, and in a span of 1 month we'll complete this whole of CSAT. So you can easily develop that quality and easily ace the CSAT and your GS paper, and you are definitely going to be in Labasna. You're definitely going to be an officer. Thank you. Take care. Keep studying hard. Have faith in yourself. You're definitely going to clear this exam. Thank you.